या एंड ऑल्सो एक बहुत इंटरेस्टिंग बात मेरे एक दोस्त ने बताया था कि अभी प्रीलिम्स ऐसे इसका पैटर्न जा रहा है कि यू आर नॉट सॉल्विंग 100 क्वेश्चंस, यू आर सॉल्विंग अराउंड 130-40 क्वेश्चन, जिसमें एनालिसिस आपको इतना लंबा करना पड़ता है कि इट टेक्स यू अराउंड एक और क्वेश्चन, एक्स्ट्रा क्वेश्चन का टाइम. तो देयर इज डाउट दैट यूपीएससी इज गेटिंग मोर challenging. The idea or the silver lining for all aspirants is that it is getting challenging for everyone. Even half a mark, it doesn't make any difference. So Zeeshan mentioned briefly about what we'll discuss about. I just want to add one or two disclaimers that whatever we'll discuss are things that work for me as a person. What I want you to take back is not that verbatim whatever I'm saying. It's just the general advices or the strategy general, not the very specific one, because everyone has a very different way of preparing, their level of retention, their level of understanding things. I mean, this is थोड़ा सा common sense वाला मुझे लगा इसमें angle है. Which of the following makes a tool with a stick to scrape insects? Now, the thing that differentiates humans from everyone else is the use of our hands. If we have dexterity with our fingers, only then can we make tools. Look at all these animals. Fishing cat, it has paws, not hands. Otter, it has paws. Sloth bear, it has paws. Orangutan is the only animal which has fingers and it has an opposable thumb. Now, this is common sense. We all know this. We have seen orangutans in pictures. Even if you don't know exactly how an orangutan looks like, it is similar to a monkey. It is of that sort of क्या बोलते हैं, similar to those species. So the correct answer is B, I believe, right? Yeah, orangutan is the correct answer. Are you saying, Abhijit, on the phone call, as you had mentioned, Right. finding the answer then and there, innovatively? So no one among us goes to the exam hall being prepared what orangutan does या दूसरे जानवरों का. Absolutely. Absolutely. Yeah, makes तो perfect sense. मतलब मेरा even fourth attempt में भी where I got 128, there'll be 40 or 45 questions जिसका आंसर आपको अच्छे से पता होगा. There'll be 20-25 questions जिसका आंसर आपको इंटेलिजेंट गेस से थोड़ा सा बेटर स्टेट में आपको होंगे. There'll be rest of the questions is the one that makes a difference. कि how much will you score, whether you'll clear the cutoff barely or clear the cutoff by a huge margin. So वो जो window है, that you have to focus on, and that comes only with practice and analysis, self-analysis, revision and practice. Experience matters in that case to be able to do intelligent guesswork. Also, in this इसके दौरान मैं just एक और चीज भी बता देता हूँ कि attempting the number of questions, there is always a doubt among students. What is my personal humble opinion is that तुम इतना practice करो कि तुम्हें ये पता चल जाए where your sweet spot is. Now that requires you to practice UPSC standard prelims mock test. एक 100 question का UPSC standard prelims mock test if you practice many of them, then you sort of know where your general efficiency accuracy is. Mine was around 70%. मतलब 4 क्वेश्चन में 3 सही होंगे जनरली स्पीकिंग. कोई भी रैंडमली आप उठा लो 4 क्वेश्चन, तो उनमें से 3 सही होगा, 1 गलत होगा. इसका मतलब मैं अगर 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहा हूँ तो मेरे 70 सही हो गए, 30 गलत हो गए. आई यूज्ड टू अटेम्प्ट अराउंड 92-93 क्वेश्चंस इन ऑल माय इन माय थर्ड एंड फोर्थ अटेम्प्ट. पहले 2 अटेम्प्ट में ये सब एनालिसिस किया नहीं था मैंने. द मिस्टेक दैट आई यूज्ड टू डू इन माय अर्लियर अटेम्प्ट्स, आई यूज्ड टू अटेम्प्ट लेस. Now for that you need to have very specific and accurate knowledge, जो it is not possible in this exam. कि तुमने 70 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया, तुम्हें पता ही है उनमें से 765 प्लस इज करेक्ट. ओनली देन यू आर क्लियरिंग, अदरवाइज यू अगेन बी इन दैट अनसर्टेन वाला ब्रैकेट. सो ये भी एक सोचने वाली बात है कि आप इतना प्रैक्टिस करो कि यू नो योर एफिशिएंसी सो दैट यू आर एबल टू क्लियर इट कंफर्टेबल. अदरवाइज वो एग्जाम के बाद, प्रीलिम्स के बाद, यू आर गोइंग टू वेस्ट 2 weeks थिंकिंग कि आपका प्रीलिम्स क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मेंस का पढ़ू कि ना पढ़ू. तो and that's the mind game that you play. That's the most common problem. ये question number 20. Yeah, that's the most common problem, and I also faced it in my second and third attempt. Third attempt में थोड़ा सा कम, क्योंकि wisdom आ गया था कि ये सब मोह माया, you should go ahead and practice. What's the worst that can happen is that you will not clear it. वो काम बाद में, वो जो preparation है वो बाद में काम आ जाता है. One thing that you can do in such situations, if you are in that uncertain wala bracket, and if you know that you're going to prepare in the next attempt, is that in those 15-20 days wala jo uncertain bracket hai before the release of the result, right, of prelims,
You study GS1, GS4, और some static subjects मेंस के लिए, जो एनीवेज आपको बाद में काम आएगा, क्योंकि करंट अफेयर्स जो भी जीएस में इन्वॉल्व है, वो अगर आप पढ़ोगे वो तो अगले साल अटेम्प्ट के लिए काम आएगा नहीं उतना, क्योंकि वो पुराना हो जाएगा। तो आप GS1 पढ़िए, GS4 पढ़िए उस टाइम पे, जो एनीवेज आपको काम आएगा, क्योंकि उसमें तो 99% स्टैटिक। So this is also one thing that I realized in my third attempt, after my third attempt, that this is one way to sort of circumvent this problem. Yeah, someone is writing that only orangutan efficient hands to hold the stick. Yes, efficient enough, not the most efficient, but only they have fingers so that they can hold the stick. So ये चीज आप याद रखिए कि you try to do static GS preparation for mains after prelims till the time results are declared, because anyways वो आपको पढ़ना ही है, and अगर इस बार नहीं हो तो अगली बार काम आ जाएगा। तो consider the following: aerosols, foam agents, fire retardants, lubricants. Okay, someone is asking, sir, PYQ versus mock, both are important. Mocks are more important because PYQs, आप ये चीज सोचिए, PYQ is only good, 99% of the PYQs is only good for you to develop the thought process, not the exact knowledge. But mocks can help you both in thought process, strategy, as well as knowledge. So, and the more mocks you practice, the better you get. PYQs आपके पास limited ही हो गए, क्योंकि बहुत पुराने PYQs will sort of be irrelevant in terms of pattern and type of question. Consider the following: in making how many of the above are hydrofluorocarbons used? ये क्वेश्चन मैंने कभी पहले देखा नहीं, ये 2023 का क्वेश्चन है. आई डोंट हैव मच टू ऐड ऑन दिस. द रीजन व्हाई आई पुट इट हियर इज, आई बिलीव द आंसर इज डी, राइट जीशान? Yeah. Yeah, so it's very improbable that only three will be correct, the fourth one will not be correct. Hydrofluorocarbons we know are there in aerosols, we know are there in foam agents, fire retardants. Lubricants के लिए I'm sometimes not sure, but it's very improbable that it will be there in the three and not be in the fourth one. Also, matlab, how many lubricants? There can be any lubricant, right? Most of the lubricants may not have hydrofluorocarbons, but दुनिया के बहत्तर lubricants जिसमें there be some traces of hydrocarbon. So again, this is like eliminating the extreme statement wala type. But this pattern, right? Only one option, only two option, only three option, only four option. This has made UPSC considerably difficult. I am lucky that in my time it was not there. 2022 prelims it started. But what Zeeshan was mentioning is also the fact that UPSC did not do this all of a sudden. It gave you 7 or 8 questions, right, in 2022 that had this pattern. So then suddenly 46 questions in 2023. So it gave you a fair warning. How do you tackle such, just tackle this pattern? Well, honestly, I don't know. The requirement of this exam has become more strict now. You need breadth of knowledge as well as depth of knowledge. Reading newspaper has become all the more important. I, for one, did not read newspaper in my 4 years of preparation. It's only before my fourth attempt was my only interview. Only before the interview that I read 1.5 months of newspaper. उससे अलावा मैंने छुआ नहीं था newspaper. But that's not a good strategy right now. Newspaper should be your primary source, and उसके साथ साथ you can have a supplementary source like compilation or Samachar Manthan is a great, I mean, supplementary source of current affairs. But newspaper should be your primary source, is what I strongly believe. Okay, Zeeshan, let's move on to the So before next question. moving, this thought process is something that helps students in the real exam hall. The way you said, if three is right, lubricants should also be part of the correct answer. Like these are such bouncer questions about which we don't have idea. The kind of extrapolation and assumption that you did, and this is the only way out in these kind of questions. Otherwise, we will have to only skip these questions. Yeah, I would rather doubt my limitation of knowledge than the efficiency of lubricant making industry in the world. I would expect that I don't know of any lubricant which does not have hydrofluorocarbons.
uh, but there definitely be some here, and not only lubricant, any of the four. uh, मतलब this looks like a question in which all the four will be sort of thing, वो feel आ जाता है. I don't know how you develop it, Oh, but this with is this practice it this is comes. very interesting. It looks like a question जहाँ सारे correct होंगे. अब ये look वाला जो बात है, intuition, this will come with practice. This is what you're saying, Abhijit. या एंड ऑल्सो एक बहुत इंटरेस्टिंग बात मेरे एक दोस्त ने बताया था कि अभी प्रीलिम्स ऐसे इसका पैटर्न जा रहा है कि यू आर नॉट सॉल्विंग 100 क्वेश्चन, यू आर सॉल्विंग अराउंड 130-40 क्वेश्चन. बेसिकली हम्म देयर आर सम क्वेश्चंस विच जिसमें एनालिसिस आपको इतना लंबा करना पड़ता है कि इट टेक्स यू अराउंड एक और क्वेश्चन, एक्स्ट्रा क्वेश्चन का टाइम. तो हम्म देयर इज नो डाउट दैट यूपीएससी इज गेटिंग मोर चैलेंजिंग. But the idea, or the silver lining for all aspirants is that it is getting challenging for everyone. UPSC has to select the best 10,000 prelims marks. So Yeah. in a way, it has not changed, but in a way, everything has changed. Yeah. So this again is sort of a common sense question. We know that some mushrooms are used as drugs. वो हम movies में देखते रहते हैं. Medicinal हमको बहुत अच्छे से पता है. Uh, uh, बायोल्यूमिनेसेंट भी ये न्यूज में आया भी था एक टाइम पे. आई थिंक दिस इज आल्सो 2023 का क्वेश्चन कि बायोल्यूमिनेसेंट मशरूम्स है एंड इंसेक्टिसाइडल. मुझे पर्सनली आई कैन नॉट थिंक ऑफ एनी, बट होगा डेफिनेटली. देयर इज नो रीजन व्हाई इट विल नॉट बी देयर. अगेन माय बेस्ट गेस वुड बी दैट ऑल फोर वुड बी करेक्ट. Yeah. I know some people are thinking that I am not giving very concrete ways to tackle such questions. That concrete ways to tackle questions, it is up to you to discover based on your practice. Because there are so many types of questions, so many different subjects. Each subject has a different thought process of solving. It is like virtually impossible. वो उस होप में नहीं बैठना चाहिए किसी को भी, किसी एस्पिरेंट को भी, कि सम डे समवन विल टेल यू वन मैजिक फॉर्मूला टू टैकल अनप्रेडिक्टेबल क्वेश्चंस इन यूपीएससी. सो वो नहीं होना चाहिए, ठीक है. दैट इज अ मिस्टेक दैट आई मेड इन माय फर्स्ट एंड सेकंड अटेम्प्ट. So don't make that mistake. You have to be proactive and keep practicing so that you discover your way of tackling such questions. I am telling my way, which is nothing out of the ordinary also, by the way. It is just basic common sense in most cases. Can we move to the next question, please? Huh. This is again a little common sense वाला मुझे लगा. ये I think 2021 prelims का है मेरे टाइम वाला. लाइट ईयर हमको पता है बेसिक साइंस से कि इट्स अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस. It's a standard. So why are standards fixed in measurements? Because they do not change, right? 1 meter is some distance that is kept in France, 1 bar, right? That distance from here to here does not change throughout the world at a particular temperature or something. So the basic idea is it does not change. Now, all the four options are talking about things that do not change. But if you see, it's the fourth option which basically says the speed of light is always the same. So uh, try to think of, try to analyze this way. By asking this question, UPSC is also checking that light year आपको पता है कि it's a unit of distance. Secondly, आपको पता है कि light year का definition क्या है, कि it's the distance light travels in 1 year. So if speed of light remains the same, and 1 year, which is like how many seconds, I don't know, उस वो into multiply करके वो distance भी fix रहेगा. So that way it's a unit of distance. Distance among stellar bodies do not change. That has nothing to do with measuring distances. Gravity of stellar bodies does not change. Again, nothing to do with gravity versus distance. Light always travels in straight lines. So what? Light can travel in like curved lines also. If the speed was uh, light does not travel in curved lines. But what I'm trying to say is you can eliminate this option. Even if light traveled in curved lines, if the speed was same, then light year could still have been the unit of distance. So it's the speed of light that always the same, which makes D the correct answer. So can we go to the next question? Yeah. Yeah. The reason why I picked this question, this is
I'm not sure if it is. I think it's 2022 prelims. I'm not sure. Is the reason why I picked this because palm oil is always in the news. We know because of palm oil crisis, prices shooting up, deforestation in Southeast Asian countries where palm oil is cultivated, a lot of things. But the extra effort that UPSC expects you to do is how many of the aspirants have actually gone and seen from the internet or from any other source that these plants or these animals that are there in the news, what is their spread, what is their native area. This is an exercise that is required. For example, any animal that is in the news that is say कि उसका IUCN status change हुआ है, in that case it is very important to first thing go and see what is their native area, how much have they spread. There are some species which are native only to a particular part of India. In this case, palm oil, it was brought to the Southeast Asian countries. It did not originate in Southeast Asian countries. It originated in African countries, I think most probably South African countries. This is something that people who are proactive, who sort of have understood a little bit about the UPSC psychology, would have seen when preparing current affairs. Yeah, the African countries. So the first option is not correct. The second and third option we know are correct because they are used in multiple things. That is why palm oil is so valuable. I think option B, 2 and 3 are correct, if I'm not wrong. Yeah. So this extra effort is also needed. That is another lesson that one needs to learn after analyzing PYQs. Whatever new things that come up, उसके around UPSC क्या क्या पूछ सकता है. UPSC has a very fondness towards asking कि ये इसका geographical reach कितना है, ये कहाँ का native है, chronology, ये सब चीजें UPSC loves to ask. तो ये सब extra चीजें you need to go and see. ठीक है, that's why I put this question. Yeah, extra चीजें से like Abhijit, can we take this example? Last webinar में भी हमने ये discuss किया था. So for example, Lakshadweep is in news. So right. North-South orientation of Lakshadweep Islands, so that becomes irrelevant because it has been in news, right? Absolutely. North-South orientation. What type of a geographical structure? It's a atoll. It's not a mountainous Corals. structure जिसके around corals बने हैं. It's different from Andaman's how. What is the geographical location vis-a-vis Mauritius, Maldives, all these places? Where does the Tropic of Cancer pass through? पूरा नया डिस्कशन ही स्टार्ट हो जाता है उससे. ज्योग्राफी का इतना सारा चीज हिडन है उस लक्षद्वीप वाले एरिया में. So someone who is proactive will always see these things. True. So that's there. Parallelly, आप उस टाइम पे अंडमान का भी रिवाइज कर सकते हैं. 10 डिग्री चैनल कहाँ से जाता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ से जाता है, व्हाट आर द आइलैंड्स देयर. मतलब लॉट ऑफ ब्रांचेस कैन ओपन अप. द आइडिया इज टू कीप योर आईज एंड ईयर्स ओपन, बी प्रोएक्टिव. आइज एंड ईयर्स ओपन से एक और चीज मुझे याद आया. मेरे अटेम्प्ट 2021 प्रीलिम्स में देयर वाज दिस क्वेश्चन about lemongrass. This I think I've discussed in many places. Some people would know about this discussing by me. 2021 में वो lemongrass के ऊपर एक क्वेश्चन था कि it's a natural insecticide. The fact that I knew it was only because वो कोविड के टाइम पे घर पे था and I had ordered something from Amazon. वहाँ पे lemongrass का प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन देखा था Amazon पे जो लिखा रहता है, उससे मुझे बस दिमाग में रह गया था और उसका स्मेल मुझे बहुत पसंद. तो ऐसे ऐसे चीज. द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज यू नेवर नो वेयर द डेटा फ्रॉम योर नेक्स्ट यूपीएससी क्वेश्चन कम्स फ्रॉम. सो नॉट ओनली बीइंग bookworm but also keeping your eyes and ears open is very important. UPSC has asked questions about movies also. The Man Who Knew Infinity, वो चंद उसके ऊपर जो था, रामानुजन के ऊपर, ये सब चीजें. Give me 1 second. अभिजीत, जस्ट टू ऐड वन पॉइंट हियर, जैसे तुमने कहा लेमन ग्रास वाला क्वेश्चन तुमको आया था क्योंकि तुमने कोई प्रोडक्ट ऑर्डर किया था ऑनलाइन एंड यू हैड रेड द डिस्क्रिप्शन. आंख और कान खुले रखने की बात हो रही है. सिमिलरली क्योंकि लेमन ग्रास पर क्वेश्चन आया था 21 में, वी इन आवर क्लास हैड डिस्कस्ड दैट क्वेश्चन. और जो प्रोजेक्शन हम बनाने की बात करें, लक्षद्वीप का हमने एग्जांपल लिया. अगर लक्षद्वीप न्यूज में है तो किस किस टाइप के क्वेश्चंस रिलेवेंट हैं, यूपीएससी क्या पूछ सकती है.
सो लेमन ग्रास पर क्वेश्चन आया था विच वॉज क्वेश्चन ऑन मॉस्किटो कंट्रोल मीन्स मॉस्किटो कंट्रोल मेजर्स। और राइट। इसी लीग में अगर यूपीएससी चाहे, अगर क्वेश्चन पूछना चाहे, किस टाइप के क्वेश्चन पूछ सकती है। तो वी हैड डिस्कस्ड वेरियस अदर मीन्स ऑफ मॉस्किटो कंट्रोल, लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज। वन अमंग देम वाज वोल्बाकिया मेथड। और 2023 में देयर वाज अ डायरेक्ट क्वेश्चन ऑन वोल्बाकिया मेथड। सो दिस इज समथिंग, पीवाईक्यू पर एम्फोसिस करने का मतलब यही तो है। यू आर ड्राइंग प्रोजेक्शंस आउट ऑफ द एग्जैक्टली। पास्ट ईयर क्वेश्चंस, सिमिलर टू व्हाट यू हैड डन विद करंट अफेयर्स। लक्षद्वीप अगर न्यूज में है, ड्रॉ दिस प्रोजेक्शंस। पास्ट ईयर क्वेश्चंस पूछे हैं, ड्रॉ दिस प्रोजेक्शंस। यस अभिजीत। या एब्सोल्युटली, यूपीएससी का थॉट प्रोसेस पता चलता है इससे, एंड सॉर्ट ऑफ इट गिव्स यू अ विंडो इनटू व्हाट मे कम। मे बट अगेन इसको ज्यादा भी रिलाई नहीं करना चाहिए, बिकॉज यूपीएससी कैन चेंज थिंग्स समटाइम्स। बट या, एक्स्ट्रा एफर्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कोई भी एक चीज करंट अफेयर्स पे है तो उसके अराउंड प्रोजेक्शंस जो आप कह रहे हैं, वो नॉलेज ट्री बनाना अराउंड इट। या So consider the following statements. 21st February. Again, this is common sense question. International Mother Language Day. How can it be declared by UNICEF? Uh, Children's Emergency Fund does not has nothing to do with culture and language. It is UNESCO, which talks about culture and language. So this way, I think the option one can be eliminated. And for as far as the second question, we all know that Pakistan tried very, very hard during its formation in 1947 to bring the Eastern Pakistan, the erstwhile Eastern Pakistan, into its hold. So it would be my guess that at that time, to appease the Bengalis, Bengali as one of the national languages. That would be my guess. So if I don't know anything about this question, which I don't know anything about, I would say option one is wrong, option two is correct. I don't know what the right answer is, by the way. दैट इज द करेक्ट Uh, आंसर। ऑप्शन okay, बी इज करेक्ट। option B is correct, right? So, I mean, I don't know anything about Constituent Assembly of Pakistan में national language क्या क्या वो किया गया था, but उस टाइम पे अपीजमेंट बहुत चला था ऑन ईस्टर्न पाकिस्तान पीपल, which later backfired during 1975 Bangladesh war, वो अलग बात। But one of these ways of appeasement, language is a very, very important tool of cultural projection, right? So it makes perfect sense for Pakistan Constituent Assembly, which was headquartered in Islamabad, to try to declare Bengali so that the other people, Eastern Pakistan people, so that was that. Can we go to the next question? या हाँ, ये मेरे प्रीलिम्स में आया था और मैंने ये गलत किया था। 2021 में आया था ये। नाउ थिंकिंग बैक, the women of Vijayanagar Empire were experts in which of the following areas? Now, बिफोर बिफोर यू मैंने शेयर योर थॉट या प्रोसेस, तुमने या रेसलिंग तो एलिमिनेट नहीं कर दिया था अभिजीत? मैंने रेसलिंग ही एलिमिनेट कर दिया था, ये सोच के कि यार वुमेन तो रेसलिंग नहीं करते होंगे। दैट आई थिंक दैट इज व्हाई यूपीएससी आस्क्ड दिस क्वेश्चन। आई एम डैम श्योर अबाउट इट कि it is something extraordinary that women were very proficient in wrestling in Vijayanagar Empire, which was the attention to which was drawn by a Portuguese writer, which is an extraordinary thing in history, which is why probably this question was asked. मैंने ऑप्शन सी मार्क किया था कि रेसलिंग तो हो नहीं सकता है, कि आपका एस्ट्रोलॉजी होगा और सूट से होगा। इट वाज माय आई डोंट नो, माय बायस में यू कैन से एट दैट टाइम कि ये तो हो नहीं सकता। तो यही आई थिंक वाज वन ऑफ द रीजंस व्हाई यूपीएससी आस्क्ड दिस क्वेश्चन टू सी कि कितने लोग सी मार्क करते हैं। आई थिंक द आई थिंक आंसर इज डी, राइट? या आंसर इज डी, 1 2 3 4 या ऑल वर या करेक्ट। एंड आई थिंक ये मैच्योरिटी एक्सपीरियंस के साथ ही आती है, ये समझ बिल्कुल। पाना कि किसी ने जानबूझकर रेसलिंग यहाँ पर यूज किया है ताकि हम लोग एलिमिनेट करें। सूटसेइंग मींस foretelling the future. या Someone is asking, so yeah.
again, yeah, this question. Under the Indian Constitution, concentration of wealth violates. ये क्वेश्चन पूछ के यूपीएससी बहुत सारा कंसेप्ट चेक कर रहा है. राइट टू इक्वालिटी डज नॉट. ओके. राइट टू इक्वालिटी, डीपीएसपी, राइट टू फ्रीडम, कंसेप्ट ऑफ वेलफेयर, ये सब कहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है? कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है? गवर्नमेंट को बोलता है कि हाउ गवर्नमेंट शुड लिव. कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ कौन करता है? इंसान. इंसान के ऊपर गवर्नमेंट ये कभी नहीं बोलेगा कि आप वेल्थ मत एक्वायर करो. एंड हाउ डू यू डिफाइन कंसेंट्रेशन ऑफ वेल्थ? व्हाट इज द लिमिट जिसके ज्यादा अगर हो गया कंसेंट्रेशन होगा वेल्थ का? ये सब तो कहीं हो ही नहीं सकता है कि कहीं पे लिखा हुआ हो. तो राइट टू इक्वालिटी कैन नॉट बी द आंसर. इक्वालिटी हैज नथिंग टू डू विथ इकोनॉमिक concentration of wealth. Right to equality की equal among equals. Right to freedom, again, irrelevant here. Concept of welfare. Now one can have the confusion between DPSP and concept of welfare, but a basic reading of DPSP would tell you that it sort of talks about welfare state, as well as it talks about equal distribution of wealth, and वो सारा principles उसमें involved है. मैं बहुत time हो गया, मैं भूल गया हूँ most of the things, but I think the answer to this is DPSP, right? Yeah, certainly. There are express provisions in the Constitution that Right, guide towards avoiding concentration of wealth. right. But fundamental rights do not talk about anything about concentration of wealth. Fundamental rights talk about limitations of the powers of the government. Yeah. It does not talk about limitations of the powers of the people. What the government can do and cannot do to you is what is talked about in FR. DPSP is state policy. कैसे होगा, क्या क्या चीजें वो उसको करना चाहिए, नॉट नेसेसरली उसको करना पड़ेगा. करना पड़ेगा इज फंडामेंटल राइट्स, एंड फंडामेंटल ड्यूटीज इज हमें क्या करना चाहिए सिटीजन. तो ये एक डिफरेंस है जो जो इंसान रियलाइज करेगा उसको ये क्वेश्चन करना इजियर हो जाएगा. अगेन, वो जो पहले टाइम में आया था, ये मेरे टाइम में आया था. दिस क्वेश्चन वाज इन माय टाइम. कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट मींस कि अ गवर्नमेंट लिमिटेड बाय द टर्म्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ये आई थिंक 2020 में पूछा था. आंसर इज डी. सो इट्स बेसिकली अगेन कि एक कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट को सिंपल वर्ड्स में कैसे हम समझते हैं, कितने अच्छे से हम समझ पाते हैं, यही यूपीएससी समझना चाहता है आपसे. I think it was asked in 2019, if I'm not wrong. 19 Abhijit, हो सकता है, हो yeah, सकता है. isn't this a question almost a replication of a previous question that we discussed? या आई दैट्स व्हाई आई पिक्ड इट अप आल्सो. ये वाला जो क्वेश्चन था, हाँ हाँ, मैं समझ गया. chief दैट्स व्हाई आई purpose of the पिक्ड इट अप. constitution. ये दिस इज 2023 एंड दैट इज 2019. 4 years का डिफरेंस. सेम क्वेश्चन पूछा है उसने. क्यों? Yeah. क्योंकि एनसीईआरटी में भी था ये, एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. इट लिमिट्स द पावर ऑफ द गवर्नमेंट. Yeah, so again, this highlights the importance of paying attention to past year PYQs. questions, past year trends. Okay, yeah. इससे पहले वाला हो गया था ना? We discussed this constitutional government. या ओके. Yeah. ये क्वेश्चन 2021 में आया था, और मैंने भी ये क्वेश्चन गलत किया था. मुझे उस टाइम पे आईसीसी टेस्ट वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का कैसे पॉइंट्स कैलकुलेट करते हैं पता नहीं था. मुझे ऐसे लगता है कि अगर मैं थोड़ा और ढंग से सोचता इस क्वेश्चन के बारे में उस टाइम पे, तो शायद मैं ये सही करता. क्योंकि इट इज वेरी, क्या बोलते हैं, बहुत नेचुरली हो सकता है. इट्स वेरी नेचुरल दैट नंबर ऑफ मैचेस जीता, उसके हिसाब से पॉइंट्स डिसाइड हुआ, उसके हिसाब से कौन टॉप 2 है वो डिसाइड हुआ. अगर इतना ही सिंपल होता तो यूपीएससी क्यों पूछेगा ये क्वेश्चन? की हुई ये तो हर हर कंपटीशन में होता है, वर्ल्ड कप में होता है, हर कंपटीशन में होता है. तो व्हाई वुड यूपीएससी आस्क दिस क्वेश्चन? इसमें कुछ अलग लगता है ना इसमें, कि टॉप कैसे होता है फाइनलिस्ट. मुझे नहीं पता, अभी भी नहीं पता है. बट नंबर ऑफ मैचेस वन से बहुत सिंपल हो जाता है ये चीज.
तो इसलिए वन ऑप्शन नहीं होगा, एंड न्यूजीलैंड वाज रैंक्ड अहेड ऑफ इंग्लैंड बिकॉज इट वॉन मोर मैचेस देन इंग्लैंड। बिकॉज वन नहीं होगा तो इट इज वेरी प्रॉबल टू भी नहीं होगा। तो आई थिंक द आंसर इज डी, राइट? Yeah, नीदर the वन एंड answer टू। is D. And very या। similar to the thought process that you applied in the previous question. Uh, विजयनगर एम्पायर वाला है, रेसलिंग being related to women. हम्म। वो विजडम, दैट विजडम केम विद एक्सपीरियंस कि चलो इसमें कुछ रेसलिंग तो जानबूझकर यूपीएससी ने डाला है। या कुछ तो अनोखी बात होगी जिसके वजह से सडनली आउट ऑफ नोवेयर स्पोर्ट्स सिलेक्ट करके इसने डाला है। मतलब हाँ, ऐसा और तो यहाँ नहीं है पे कि। जैसे या या हाँ, प्लीज प्लीज। अभी जैसे तुमने कहा कि फाइन स्टेटमेंट में इतना सिंपल है, यूपीएससी अगर डाल रही तो जानबूझकर डेलिबरेटली ही डाला होगा टू सेट अ ट्रैप। फाइनलिस्ट आर डिसाइडेड बाय द नंबर ऑफ मैचेस दे वन। तो दिस विजडम कई सारे स्टूडेंट जो अभी फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहे होंगे 2024 में, प्रॉबली दे माइट नॉट बी एबल टू कनेक्ट विथ दिस थॉट प्रोसेस। अभी अभी प्रैक्टिस करेंगे ये लोग तो वो ज्यादा कनेक्ट कर पाएंगे। पहली बार अगर सुन रहे होंगे ये वाली रीजनिंग तो थोड़ी सी शायद अटपटी लग रही होगी, बट गाइस दिस दिस कम्स विद प्रैक्टिस।